हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज द फ्लो ऑफ करंट, हाउ टू फ्लो द करंट फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, ये हमने सब पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे कि जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें एक करंट फ्लो करने से पहले और जस्ट बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट आता है। तो वो पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। Electrons flow in the conductor. This is a conducting wire. These are the free electrons moving in different direction randomly, and in this condition the average velocity of the free electrons, average velocity of the free electrons in absence of external electric field is equal to 0. जब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम नहीं लगाते हैं किसी कंडक्टर पर, तो इलेक्ट्रॉन्स का जिग-जैग मोशन होता है एंड रैंडम मोशन होता है, हम ये कह सकते हैं कि, और सारे डायरेक्शन में जब ये डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड देयर इज नो करंट passing through the conductor. When we applied the electric field on the conducting wire, in presence of electric field, हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मोशन डिफाइन करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन किस तरीके से होता है। दिस इज द सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये जो रेड सर्कल्स हमने बनाए ये शो कर रहे हैं कि विदाउट इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो व्हाइट सर्कल से हमको ऐसा पता लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्लाइटली टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मूव कर रहे हैं एंड इन दिस डायरेक्शन देयर विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी against the electric field. Electric field is applied from positive electrode to negative electrode. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला होगा एंड इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि in the presence of external electric field, the average velocity in the direction of against the electric field in the direction of opposite to the electric field is called drift velocity of the electrons. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद डिफाइन करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी भी कंडक्टर पर अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो एक रिजल्टेंट वेलोसिटी हमको मिलती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। एंड हाउ टू कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Let L is the length of conductor and A is area of cross section, then volume of conductor will be AL. Let N be the number of free electrons per unit volume
then total number of free electrons in the volume Al will be NaL. E is the charge of one electron. So total charge of NaL electrons will be Q is equal to ENAL. Let Vd is the drift velocity. After applying the external electric field, then time period will be the length of the conductor L divided by Vd. Total time required to pass through the conductor will be length of the conductor upon the drift velocity. Then current I is denoted by Q by T, that is E N A L upon L by Vd. I will be equal to A N E Vd. So the drift velocity Vd will be equal to I upon AN. The drift velocity is directly proportional to the external electric field mu is proportional to E, Vd is proportional to E. Drift velocity is directly proportional to external electric field, and Vd is equal to mu E, where mu is the mobility of electron. It depends on the nature of substance. So I will be equal to ANE mu E. I will be equal to ANE mu E is equal to V by L, potential difference by on the length. I upon V will be equal to ANE mu upon L, that is equal to the resistance. Because according to Ohm's law, V is proportional to I, and V is equal to IR, or R will be equal to V upon I. Here R is the resistance of the wire. Now come to the Ohm's law. This is rheostat to control the current in the circuit. This is the key, this is battery, this is ammeter, which is always connected in series. This is voltmeter, it is always connected in parallel, and this is the resistance wire. When we increase the
current in the circuit, potential difference across the resistance wire R is also be increases. Means the first point of Ohm's law, the potential difference across any resistance wire proportional to the flow of current. Means V is proportional to I, and V is equal to IR. R is equal to V upon I. The graph between V and I will be a straight line. This angle theta, tan theta will be Pm upon Om, that is V upon I, that is equal to the radius. It is equal to the resistance. Tan theta equal to the resistance, that is equal to V upon I.